Good evening, dear students. Good evening, everyone. So, dear students, welcome to Unacademy, India's online largest learning platform, and subscribe Unacademy right now. If you are subscribing Unacademy, you will getting bundle of joys. You will getting daily live classes. In live classes में आप अपने एजुकेटर से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं. You will be getting structured course जिसमें टॉपिक एकदम बेसिक से कवर होकर अप टू एडवांस लेवल तक कवर किया जाता है. You will be getting live test and quizzes. Live test and quizzes में आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग पता चलती है, अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस पता चलती है. एंड गाइस यू विल गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस. एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. So guys, just download Unacademy app right now and experience the new era of learning. Myself, Gaurav Gupta, I am author, mentor and motivator. Having experience of 8 years, I have mentored more than 85,000 students across the country, both online and offline, and I have been associated with various prestigious institutes in Delhi. So guys, this is my Unacademy profile link. Just download Unacademy app and follow my profile. आपको मेरे सभी lectures के update SMS के through यहीं पे मिल जाएंगे. And this is my official Telegram channel. So just join this channel to get latest PDF of all the lectures. So guys, you'll be getting classes from top educators including me. आप अपने पसंद के एजुकेटर से अपने टाइम, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं. Right now there are 15,000 plus courses which are available on Unacademy, and these courses has been designed wonderfully to ensure your success in the exams. So guys, Unacademy Plus में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशंस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल. इसकी 1 ईयर की फी है 49,500, 2 ईयर्स की फीस है 72,000 एंड 3 ईयर्स की फीस है 90,000. और जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे GG10 तो आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. गाइस की अनअकैडमी आइकॉनिक एक लेटेस्ट वेरिएंट है जिसमें आपको प्लस कोर्स के सारे फीचर तो मिलते ही हैं, लेकिन इसमें सबसे यूनिक थिंग है कि इसमें आपको एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल मेंटर असाइन हो जाते हैं. ये पर्सनल कोच, ये पर्सनल मेंटर आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन के दौरान हेल्प करते हैं. किस टॉपिक को पहले कंप्लीट करना है, किसको बाद में कंप्लीट करना है, किस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे कितना टाइम देना है, इस तरह की एकदम माइक्रो इनपुट्स जो आपको ये आपके पर्सनल मेंटर हेल्प करते हैं देने में. एंड डेली बेसिस पे आपको मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है. आपको कस्टमाइज्ड स्टडी प्लानर आपको मिलता है और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है जिसमें बेसिकली आपने कोई आंसर लिखा है या कोई एस्से लिखा है तो आप उसको चेक भी करा सकते हैं अपने मेंटर से. सो गाइज, इसकी 1 ईयर की फीस है 69,500, 2 ईयर्स की फीस है 1,07,000 एंड 3 ईयर्स की फीस है 1,41,000. एंड जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे GG10 तो इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. आपकी 1 ईयर की फी हो जाएगी 62,550, 2 ईयर्स की फीस हो जाएगी 96,300 एंड 3 ईयर्स की फीस हो जाएगी 1,26,900 रुपीज़. गाइस डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने अनअकैडमी ने ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आपको लॉन्च कर दिए हैं. ये सब 1 ईयर की फी है आपकी 27,500 रुपीज़, 2 ईयर्स की फीस है 40,000 एंड 3 ईयर्स की फीस है 50,000. बट जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं GG10 तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. आपकी 1 ईयर की फी हो जाएगी 24,750, 2 ईयर्स की फीस 36,000 एंड 3 ईयर्स की फीस 45,000 रुपीज़. नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन. Question number 1. Consider the following statement. Number 1. Organic farming has a role to play in soil conservation. Second, the largest area affected by soil erosion in India is the state of Rajasthan, followed by Jharkhand. Choose the correct code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Yes, please answer this question. Question number 1. Yes, question number 1. Organic farming has a role to play in soil conservation. Second है the largest area affected by. Just hold on, guys. Yes. Question number 1. So guys, ऑर्गेनिक फार्मिंग से सॉइल कंजर्वेशन होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Then the largest area affected by soil erosion in India is the state of Rajasthan, followed by Jharkhand. So this sounds to be incorrect. So the second statement is incorrect. Your answer is option A. अब second statement क्यों incorrect है? Because the largest area affected by soil erosion in India is the state of Rajasthan, followed by Madhya Pradesh. Okay. Next.
Question number 2 पे आता है, consider the following statements. Number 1, sheet erosion results in the formation of gullies resulting in loss of underground soil. Second, jhum cultivation is a type of slash and burn method of cultivation. Third, the burning of forest results in soil erosion and gradual degradation of soil. Choose the correct code. Choose the correct code. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3, and option D all of the above. Sheet erosion results in the formation of gullies resulting in loss of underground soil. Jhum cultivation is a type of slash and burn method of cultivation. ये तो correct है. The burning of forest results in soil erosion and gradual degradation of soil. ये भी correct है. First statement we have to check. Sheet erosion results in the formation of gullies resulting in the loss of underground soil. तो basically surface soil को भी ये जो basically यहाँ पे erosion होता है. It is not only underground soil. So first statement is incorrect. Your answer will be option B 2 and 3. In case of sheet erosion, there will be a uniform removal of the top soil just like a sheet. This is the exact answer. So basically underground soil नहीं, top sheet भी, top soil भी जो इसमें erosion होता है. Question number 3 पे आते हैं. Consider the following statements. Number 1, leguminous plants can be cultivated in intervals which will increase the fertility of the soil. Second, cropping after cropping will leave the land unfertile. Third, soil fertility is mostly affected in the states of Punjab, Haryana and UP. Choose the correct code. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C all of the above, and option D none. Leguminous plants can be cultivated in intervals which will increase the fertility of the soil. बिल्कुल सही बात है. नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं ये. ओके. Then cropping after cropping will leave the land unfertile. ये भी टू द एक्सटेंट काफी सही है ये. ठीक है. Then soil fertility is mostly affected in the state of पंजाब, हरियाणा एंड यूपी. क्योंकि देखो यहाँ इन स्टेट्स में ना ओवर इरिगेशन की भी प्रॉब्लम है. फिर ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे काफी सक्सेसफुल रहा है. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. सो इससे क्या है, सॉइल फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव. तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. ओके. लैंड शुड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ period of time and let to retain its fertility. The major reasons for decline of soil fertility are frequent cropping, unscientific rotation of crops, extensive and excessive use of chemical fertilizers, too much use of chemical pesticides. Consider the following statement. Chambal Valley is an example of gully erosion. Second, rill is a shadow channel cut into soil by the erosive action of flowing water. Third, sheet erosion are uniform removal of the top soil just like a sheet. Choose the correct code. Option A 1 and 2 only, option B 2 only, option C 2 and 3, and option D 1, 2 and 3. Question number 4. Chambal Valley is an example of gully erosion. तो चंबल वैली बेसिकली हम देखते हैं मालवा प्लेटू वाला रीजन है. यहाँ पे रिवर्स ने क्या करा है, रिवर्स ने रेवाइंस फॉर्म करे हैं, बेडलाइन टोपोग्राफी जिसको हम बोलते हैं. ओके. तो दे हैव फाउंड वेरी डीप गुलीज, बहुत डीप गुलीज यहाँ बनाई हुई है. सो इस तरह का बेडलाइन टोपोग्राफी है. तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. रिल इज अ शैडो चैनल कट इनटू सॉइल बाय द इरोसिव एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर. बिल्कुल करेक्ट. एक माइनर स्ट्रीम होती है. शीट इरोजन आर यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल जस्ट लाइक अ शीट. ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये चीज पढ़ी है. तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. ऑप्शन डी आपका आंसर होगा 1, 2 एंड 3. सो गुली इरोजन, रिल विल एनलार्ज एज गुलीज एंड लैंड विल बी डिसऑर्डर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following state in India have certain characteristics? Number 1, northern part consists of arid and semi-arid soil. Second, cultivation of cash crops is predominant over food crops. Third, central part of the state produces cotton. Choose the correct code. Choose the correct code. Northern part consists of arid and semi-arid soil. Second, cultivation of cash crops is predominant over food crops. Third, central part of the state produces cotton. Choose the correct code. Option A Maharashtra, option B Madhya Pradesh, option C Gujarat, and option D Uttar Pradesh. Question number 5.
यस, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सो नॉर्दर्न पार्ट में एरिड और सेमी एरिड सॉइल है, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट प्रोड्यूसेस कॉटन, यानी इस स्टेट के सेंट्रल पार्ट में कॉटन प्रोड्यूस होती है। सो देखो कॉटन की जब बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल रीजन ही आएगा। ओके, फिर बात करते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। सो बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है बेसिकली दिस इज द एरिड सेमी एरिड रीजन, एग्जैक्टली करेक्ट। तो दो हमारे स्टेटमेंट्स मतलब दो फैक्टर्स हमारे यहाँ पे मैच आसानी से हो रहे हैं एंड इस रीजन में कैश क्रॉप्स ही मेनली ग्रो किया जाता है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, गुजरात। ओके, which of the following statement which of the following statements regarding arid and desert soil of India are correct? First, it receives annual rainfall of more than 50 centimeter. Second, deposited mainly by wind activities. Third, high salt content. And fourth, contains huge amount of moisture and humus. Choose the correct code. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 4, and option D 2 and 4. Question number 6. Which of the following statement regarding arid and desert soil of India are correct? It receives annual rainfall of more than 50 centimeter, तो basically less than 50 centimeter होना चाहिए। Deposited mainly by wind activities, ठीक है। High salt content, ये दो पॉइंट तो मैच होंगे ही होंगे, दो स्टेटमेंट। And contains huge amount of moisture and humus, how it could be possible? So जो डेजर्ट सॉइल है तो ह्यूमस और मतलब मॉइस्चर इतना कैसे आ जाएगा? सो ये इनकरेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट में इनकरेक्ट है। सो 2 and 3 is correct, so answer will be option B. Answer will be option B, 2 and 3. So it receives annual rainfall of less than 50 centimeter and there is lack of moisture and humus. Next question पे आते हैं। Question number 7. You are on a vacation and plan to visit Jharkhand, where found soil present there are mostly of red color. You try to find out the reason for red color of soil and the research came out with a conclusion that the red color is due to, इतनी कहानी इन्होंने लिखी, सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू, ऐसे भी लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट को परेशान करना है तो ऑब्वियसली लिखेंगे ऐसी चीज़ें। सो रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड्स, या और आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, यानी कि जिसको बोलते हैं फेरस, या और यानी कि फेरिक ऑक्साइड। तो प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड्स, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, तो यूपीएस मतलब क्वेश्चन पढ़ने में एकदम ऐसा लगेगा कि अचानक से क्या पूछ लिया इन्होंने और घूम फिर के एक छोटा सा आंसर यहाँ पे आया है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, सेल्फ फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। बी, सेल्फ फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटराइट सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। 10, सेल्फ फ्लफिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरिड सॉइल एज इट डेवलप्स। सो देखो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं मोंटमोरिलोनाइट। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली ये जो सॉइल है ये इसमें सेल्फ फ्लफिंग कैपेसिटी आ जाती है, सेल्फ फ्लफिंग फीचर आ जाता है। अब मोंटमोरिलोनाइट की वजह से क्या है कि ये जो सॉइल अगर इसको थोड़ा सा पानी डालोगे तो फूल जाएगी, अगर ड्राई हो गई तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाता है। और दूसरा इसमें सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइड, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइड, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ जरा ध्यान में रखना, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइड एंड मोंटमोरिलोनाइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन इज सेल्फ फ्लफिंग। इस सॉइल में बेसिकली वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। यानी कि अगर एक जैसे आपने फोम देखी होगी जिसमें मॉइस्चर रिटेन करके रखती है, जिससे बेसिकली हम कैश वगैरह गिनते हैं, ठीक है। सो जो फोम, इस फोम में क्या होता है, मॉइस्चर रिटेन रहता है। तो इन द सेम वे ये भी एक स्पंज की तरह काम करती है जो बेसिकली मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। इससे क्या होता है कि क्रॉप्स की जो रूट्स है उनको सस्टेन्ड सप्लाई भी मिलती है मॉइस्चर की, साथ के साथ मॉइस्चर जो रूट है वो ठंडी भी रहती है। और अगर किसी क्रॉप की, किसी ट्री की रूट्स ठंडी रहती हैं और सस्टेन्ड उसको सप्लाई मिल रही है मॉइस्चर की, तो द फ्रूट्स, द फ्लावर्स विल बी क्वाइट ब्रॉड, ठीक है, काफ़ी बड़े होंगे और इसकी ग्रोथ भी प्लांट की या क्रॉप की काफ़ी अच्छी होगी। ओके, जैसा आपने देखा है कि टेरेस फार्मिंग के टाइम पे
जो टेरेस में क्या हो रखा, टेरेस फार्मिंग में चाय ही क्यों ग्रो करते हैं हम? अगर टेरेस फार्मिंग है तो इन फील्ड्स में जब हम चाय की खेती कर रहे होते हैं तो इसका भी पर्पस यही होता है कि इसको बस थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए होता है, इनके रूट्स को थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, जिससे ये वेट रहेंगी एंड कूल रहेंगी। और जब वेट एंड कूल रहेंगी तो क्या होगा इसमें कि इनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड होंगी, तो जो चाय की पत्ती का जो प्रोडक्शन होगा कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा ये। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पीटी सॉइल? A large quantity of dead organic matter oblique humus which makes the soil alkaline. Second, they are heavy soil with black color. Third, they have a huge vegetation cover. Choose the incorrect code. Question number 9. Question number 9. A large quantity of dead organic matter oblique humus which makes the soil alkaline. Second, they are heavy soil with black color. Third, they have a huge vegetation cover. Choose the incorrect code. Option A 1 and 2. Option B 2 only. Option C 3 only. And option D none. तो बेसिकली जब सॉइल एल्कलाइन हो जाएगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो ह्यूज वेजिटेशन कवर डजंट साउंड्स टू बी करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे पूछा ही गया है चूज द इनकरेक्ट कोड, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 ओनली. ओके, so it is found in the areas of heavy rainfall and high humidity. Growth of vegetation is very less. इसके अलावा एल्कलाइन सॉइल आपको दूसरी जगह मिलेगी, वो है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर क्या होता है, ट्यूबवेल इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है, और जब ट्यूबवेल इरिगेशन बहुत पॉपुलर है तो क्या होता है कि फार्मर यहाँ पे अब बिजली का बिल इनको पे करना नहीं पड़ता, मतलब पे क्या इन द सेंस कि मतलब कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर लेते हैं उसमें. ओके, एंड नाउ डोंट फील ऑफेंडेड अगर कोई ऐसा लग रहा हो किसी को, लेकिन द फैक्ट इज कि बिजली काफ़ी सस्ती भी मिल रही होती है और फ्लैट रेट होता है. सबसे बड़ी कमी यह है कि ट्यूबवेल के लिए फ्लैट रेट होता है कि 100 रुपये महीना देना है. अब 100 रुपये महीने में कितनी भी ट्यूबवेल चला लो, ठीक है, 100 रुपये 150 रुपये ऐसे ही. नाउ व्हाट हैपन्स कि फार्मर्स रात के टाइम में ट्यूबवेल चला के छोड़ देते हैं वायर कनेक्ट करके, और ये 4 घंटे में 5 घंटे में पता चला पूरे खेत को भिगा देती है. तो क्या होता है, बहुत सारा पानी नीचे परकोलेट होना चालू हो जाता है, और क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन से जो सॉल्ट है, सॉल्ट बाहर आके जमा होना चालू हो जाता है. अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस पूरे फील्ड पे सॉल्ट दूर दूर तक फैल जाता है, और इसको जो है एल्कलिनिटी इंक्रीज कर देता है इसकी. इसके वजह से क्या होता है कि सॉइल जो है फिर फर्टाइल कम हो जाती है और वेजिटेशन नहीं हो पाती है. इस एल्कलिनिटी को कम करने के लिए इस सॉइल पे, ऐसी सॉइल पे जिप्सम को अप्लाई करना चाहिए. जिप्सम हम इसमें ऐसी सॉइल पे मिक्स करते हैं तो इस सॉइल की एल्कलिनिटी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है. फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The soils of Peninsular India are those which have been formed by the decomposition of rocks in situ, that is directly from the underlying rocks. Second, the soils of the extra peninsular are formed due to the depositional work of the rivers and the winds. Choose the correct code. Question number 10. तो पेनिनसुलर रॉक जो है बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया, इट इज द ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर ऑफ ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो रॉक्स हैं उन रॉक्स के अपनी ही जगह पे डिसइंटीग्रेशन होकर वेदरिंग प्रोसेस होके और बाद में फिर जो है पेडोजेनेसिस प्रोसेस से सॉइल फॉर्मेशन हुआ है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस. द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस इज नोन एज पेडोजेनेसिस. एंड वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस में बेसिकली जब कोई रॉक है और ये अपनी जगह पे पड़े पड़े ही छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, तो ये क्या है, वेदरिंग प्रोसेस है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड लिखा है द सॉइल्स ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुला आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स एंड विंड. एक्स्ट्रा पेनिनसुला का मतलब हो गया हिमालय की बात की जा रही है यहाँ पे. तो द सॉइल्स ऑफ हिमालय फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर्स एंड द विंड्स. ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, क्योंकि करेक्ट ही पूछा गया है यहाँ पे. ओके, the soils of the extra peninsula are mainly found in the river valleys and deltas. They are very deep and constitute some of the most fertile tracts of the country. They are often referred to as transport or zonal soil.
The soils of peninsular India are transported and redeposited to a limited extent and are known as sedentary soil. Question number 11 पे आते हैं. The biodiversity forms the basis for human existence in the following ways. Number 1, soil formation. Number 2, prevention of soil erosion. Number 3, recycling of waste. And number 4, pollination of crops. Choose the correct code. Option A 1, 2 and 3 only. Option B 2, 3 and 4 only. Option C 1 and 4 only. And option D 1, 2, 3 and 4. Yes, question number 11. Yes guys, question number 11. So देखो, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन भी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज. सो सॉइल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट. रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स. अगर क्रॉप पॉलिनेशन नहीं होगा ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा. सो चारों ही स्टेटमेंट्स, चारों ही पेयर्स जो भी है करेक्ट है. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4. नेक्स्ट आगे करते हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्प्स इन द formation and maintenance of soil structure and the retention of moisture and nutrient levels. Biodiversity supports ecosystem services including air quality, climate water purification, pollination and prevention of erosion. Question number 12 पे आते हैं. Which of the following can be found as pollutants in the drinking water in some parts of India? Number 1, arsenic. Number 2, sorbitol. Number 3, fluoride. And number 4, formaldehyde. Choose the correct code. Yes. Yes guys. So इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. आर्सेनिक एंड फ्लोराइड ये दो चीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सॉर्बिटोल एंड फॉर्मल्डिहाइड दे आर अनदर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है. सो आर्सेनिक एंड फ्लोराइड द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3. So drinking water in some parts of India have contaminants like arsenic, fluoride, other than many other contaminants. The sources of fluoride are erosion of natural deposits, discharge from fertilizers and aluminium factories. Okay. Next question पे आते हैं. Question number 13 पे. Acid rain is caused by the pollution of environment by option A carbon dioxide and nitrogen, option B carbon monoxide and carbon dioxide, option C ozone and carbon dioxide, and option D nitrous oxide and sulfur dioxide. Yes. So इसका आंसर है ऑप्शन डी गाइस, nitrous oxide and sulfur dioxide. And acid rain is caused by the pollution of environment by nitrous oxide and sulfur dioxide. So acid rain is caused by a chemical reaction that begins when compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the air. These substances can rise very high into the atmosphere where they mix and react with water, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutants known as acid rain. Next question पे आते हैं जल्दी से. Question number 14. Photochemical smog is a resultant out of reaction among. Question number 14. Photochemical smog is a resultant of the reaction among option A NO2, O3 and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. Then carbon monoxide, oxygen and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. And the rest two options. So guys, question number 14 का क्योंकि इट इज हार्ड फॉर अ टेक्निकल क्वेश्चन. ठीक है. सो इसका आंसर मैं बता देता हूँ सिर्फ आपको. इट्स आंसर इज ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, देन O3, देन पेरीऑक्सीटाइल नाइट्रेट यानी ओजोन O3. ये तीनों मिलके बेसिकली जो है फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं. फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट टू सनलाइट creating a brown haze above cities. It tends to occur more often in summer because that is when we have the most sunlight.
Question number 15. In India, the problem of soil erosion is associated with which of the following? Number 1, terrace cultivation. Number 2, deforestation. And number 3, tropical climate. Choose the correct code. Question number 15. तो देखो अब ऐसा इतना इजी क्वेश्चन जब आता है ना, अचानक से लोगों को लगता है कि अरे ये क्या हो सकता है कि यूपीएससी इतना इजी क्वेश्चन भी दे सकता है. सो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा, डिफॉरेस्टेशन. ओके. So large scale deforestation is one of the major cause for soil erosion in India. The roots of forest trees have hold and bind the soil when there is running water, such as in the case of floods, etc. Question number 16 पे आते हैं. Other than poaching, what are the possible reasons for the decline in the population of Ganga's river dolphin? 2014 का क्वेश्चन है ये. Number 1, construction of dams and barrages on rivers. Number 2, increase in the population of crocodiles in rivers. Number 3, getting trapped in fishing nets accidentally. And number 4, use of synthetic fertilizers and other agricultural chemicals in crop fields in the vicinity of rivers. Choose the correct code. Choose the correct code. Question number 16. Other than poaching, what are the possible reasons for the decline in the population of Ganges river dolphin? First है construction of dam and barrage on river. Second is increase in the population of crocodiles in rivers. Third, getting trapped in fishing nets accidentally. Number 4, use of synthetic fertilizers and other agricultural chemicals in crop fields in the vicinity of river. अब सेकंड स्टेटमेंट का ऐसा हमारे पास कोई डेटा तो है नहीं कि हम कहेंगे कि इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन या कुछ भी है, तो ये हम यहाँ पे हटा देते हैं. 1, 3 एंड 4 का ऑप्शन के हिसाब से योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4. So population of Ganga's river dolphin on the decline. New Delhi, the population of the Ganga river dolphin has declined to less than 1800 from 6000 in 1982 due to construction of dams and water pollution caused by pesticides, fertilizers and industrial effluents, a leading conservation organization has found. Question number 17. There is some concern regarding the nanoparticles of some chemical elements that are used by the industry in the manufacture of various products. First, they can accumulate in environment and contaminate water and soil. Second, they can enter the food chain. Third, they can trigger the production of free radicals. Choose the correct code. Question number 17. Yes, question number 17. Guys, question number 17 में फर्स्ट स्टेटमेंट दे कैन एक्यूमुलेट एनवायरमेंट एंड कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल, ये करेक्ट है. दे कैन एंटर इनटू द फूड चेन, एब्सोल्युटली करेक्ट है. एंड दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स जब ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो ऑब्वियसली गाइस उस केस में क्या होता है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है, लोगों को थकान महसूस होनी चालू हो जाती है. सो योर आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 and 3. Two basic strategies are used to produce nanoparticles, top down and bottom up. The term top down refers here to the mechanical crushing of source material using a Millian process. In the bottom up strategy, structures are built up by the chemical processes. Question number 18. Which of the following pollutants released by steel industry in India? First, oxides of sulfur. Second, oxides of nitrogen. Third, carbon monoxide. And fourth, carbon dioxide. Choose the incorrect code. इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट स्टील इंडस्ट्री से रिलीज होता है? यस, क्वेश्चन नंबर 18. चूज द इनकरेक्ट कोड पूछा गया है. चूज द इनकरेक्ट कोड. सो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल 4 आर करेक्ट. सो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. The answer will be option D, none of the above. Let us come to the next question. In steel furnace, coke reacts with iron ore, releasing iron and generating carbon monoxide, carbon dioxide gases. Due to use of coal, pollutants such as sulfur dioxide and nitrous dioxide. So, question number 19 पर है, which of the following is not a primary greenhouse gas? Carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, and ozone is not a primary greenhouse gas. Question number 19. So guys,
यहाँ पे basically answer will be option C, nitrogen oxide. It is not a primary greenhouse gas. Nitrogen oxides acts as an indirect greenhouse gas by producing the tropospheric greenhouse gas ozone via photochemical reactions in the atmosphere. The primary greenhouse gases in Earth's atmosphere are water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and ozone. Question number 20 by the consider the following statement. Number 1, the COP14 of the United Nations Convention to Combat Desertification was held in Greater Noida, UP. Second, it comes with a plan to save the planet from losing more land and to achieve Sustainable Development Goal target of land degradation neutrality by 2030. Choose the correct code. So guys, यहाँ पे दोनों ही statements correct हैं. Both of the statements are correct. So your answer will be option C, both 1 and 2. Your answer will be option C, both 1 and 2. So India takes over the presidency of UNCCD from China for next 2 years. It will cater the need to achieve the Sustainable Development Goals and focused vision of doubling the farmers' income by 2022. Drought forecasting toolcast was unveiled at UNCCD COP14 event. So guys, this is all about for this particular session, and इसके बाद हम कल मिलेंगे दोबारा से, and I will update the timing in the Telegram channel. So Telegram channel is Unacademy _Gaurav Gupta, and please use my code GG10 to get 10% discount.